Hello everyone, welcome back to my channel Mindful Musings. I am here with yet another video in which I will be majorly talking about key takeaways from the first half of 2025. For those of you who do not know me, I am Chandrika Sharma, who is just a girl who loves to think a lot and talk about it. I am somebody who overanalyzes every situation in her life and critically dissects everything. So I have tried to organize a lot of information in this one video to let you all know how I have perceived things about life as somebody who is in her mid 20s. So let's not waste time and get straight into the video. So very first thing is the belief system. Belief system के बारे में मैंने पढ़ा था, सुना था, पर इस साल उसकी genuinely importance समझ में आई है. एंड ये समझ में आया कि बिलीफ सिस्टम इज एवरीथिंग. वो एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जो आपके अंदर बचपन से इंस्टॉल किया जाता है बाय योर टीचर्स, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, योर फैमिली फॉर दैट मैटर. एंड वो सब एंड ऑल्सो योर एक्सपीरियंसेस सब मिलके आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट लाइफ. सो इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल बट ऑल्सो अंडर योर कंट्रोल. यू शुड नो दैट ये सब आपको बताया गया है कि आप कैसे हो या आप क्या कर सकते हो. इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू. द ट्रूथ कैन बी मैनिपुलेटेड बाय यू, बाय हाउ यू थिंक. सेकेंडली, बिलीफ सिस्टम अगर नहीं है, इफ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज, थिंग्स कैन रियली गो डाउन हिल एंड completely against you. I have experienced this big time this year and I just know that हर चीज़ की बुनियाद ना आपके ऊपर, oh my god, बुनियाद इतना बड़ा वर्ड, हर चीज़ का एक नींव कह लो या कुछ भी कह लो. इट्स योर बिलीफ सिस्टम ऑन एनीथिंग, ऑन any matter. I just hope I'm not sounding very abstract, but just understand कि I'll just add a picture here that if you do not believe in yourself, आपके सारे efforts कम पड़ सकते हैं. दुनिया को कुछ भी कहने दो, कितने भी setbacks आ जाए, just know your worth. Yes, I'll rest here with the first lesson. Let's jump into the second lesson, which is accept your mistakes. पहले ना मेरे अंदर ये बहुत ईगो रहता था कि मैं तो गलत नहीं हो सकती हूँ. I am a very mature personality and I cannot be wrong. But thinking that way is very wrong. You do make mistakes and you know when you've actually messed up. And there will be people जो आपको बताएंगे कि yes, you've messed up. See, this is not the end of life. We are humans, we do make mistakes and we can always fix them. Just do it as soon as you can. Life is actually very short to live in guilt and in regret and keep on thinking about what happened, why it happened. Just fix it and get done with it. Third would be that you really need to read and study yourself. You need to know yourself. आप क्या हो, आप अपने लाइफ से क्या चाहते हो, जो आप चाहते हो वो आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सच में ट्रिगर कर देती है. अगर आप अपने आप को जान जाओगे ना, अपना सारा फोकस अपने ऊपर ले आओगे एंड यू रियली एक्सप्लोर योर सेल्फ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. आई डिड नॉट नो दिस बट the more I started to do this कि yes, this is what I want, this is what I can bring to the table and this is what I cannot take. So आप लाइफ को लेके बहुत सिलेक्टिव हो जाते हो एंड थिंग्स गेट रियली सॉर्टेड. आपको अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है. नाउ फॉर दैट यू कैन रियली राइट अबाउट योर सेल्फ. कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड दैट स्कोप यू कैन ओनली एक्सप्लोर when you keep the focus on yourself and you know yourself. Okay, the art of communication, which is so important, जो आजकल पता नहीं क्यों शायद लोगों के अंदर से ख़त्म होता जा रहा है. चीज़ों को बात करके सॉल्व करना, taking the effort, you know, from both side, communicating and solving a thing is so real and so important, but it takes effort, it takes guts to confront the difficult conversation, जो कि लोग नहीं करना चाहते हैं. I used to do the same mistake.
बट आई हैव अ स्टोरी. पहले आई वॉज somebody who was dealing with people pleasing, जो मैं करती थी to make people like me or make them happy. I stepped over it. I came into a zone जहाँ पर I allowed myself to feel bad. पहले if I used to feel bad, I used to let it go and just be happy to make others happy and not be the trouble in any situation. But then I became a person that yes, you are allowed to feel bad. You do not need to suppress things which you are feeling. I'm sorry about this noise, it's not under my control. बट उसके बाद क्या वो चीज़ मैं खुद को नहीं सिखा पाई. इफ़ यू फेल्ट बैड, आई यूज टू जस्ट लीव दैट पर्सन एंड मूव अहेड विद माई लाइफ. इट यूज टू पोक मी इन द हेड कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट आई यूज टू फील लाइक आई जस्ट मूव्ड ऑन, आई डोंट प्लीज पीपल एनी मोर, और मैं बस मुझे कुछ बुरा लगा आई जस्ट वॉक अवे, विच वॉज रॉन्ग. I did create distance with a lot of people in my life for this very reason. They did hurt me, and I understand people do make mistakes. But then I realized कि ऐसे मैं कितने लोगों से कट ऑफ करूँगी. I will be left alone. You cannot just leave people for one mistake made by them. People do make mistakes. I too make mistakes. But things can be talked out and get sorted, and you can save a lot of friendships, relations, and relationships for that matter. So I think art of communication is very important, which I recently did, and it was such a good feeling. You go, you talk, you sort things out, and then you just leave it. You do not have to force things to be the same again, but things should be said just the way that is. मेरे जो reactions हैं वो बहुत slow आते हैं. If I am feeling something right now, I cannot express it अभी, but I'll express it later, and तब तक बात मेरे दिमाग में इतनी भर जाती है and things actually get messed up. You should know how to talk to their face respectfully in a very sorted manner without being melodramatic. Be crisp. Just say your thing ki, see, this was not right, and the other person will say sorry. If the other person is working on it, good, your friendship and that bond is saved. And if the other person is not respecting your boundaries, you should just create distance. See how easy is that. And I did not know how to do this, but this year so many instances, and I've learned that. It is very obvious. Do not give up on yourself. Never. Never ever. इस साल वो और ज़्यादा मेरे अंदर आया. I am not a kind of person who gives up easily. हाँ, मैं डरती हूँ, मैं खुद पर डाउट करती हूँ, पर मैं गिव अप नहीं करती हूँ. Just stay there. Stay there. Things will work out. और एक ना this year एक बहुत ही अच्छा एक calm सेल्फ बिलीफ मेरे अंदर आया है कि अगर मैं गिर भी जाती हूँ, आई विल बी देयर टू कैच माई सेल्फ. यू नो दैट बिलीफ, वॉट एवर हैपन्स, आई कैन बी देयर फॉर माई सेल्फ, एंड whoever will be standing behind me to catch me will be the grown up and better version of myself. I heard about this somewhere, and it was so good to realize it and to actually experience it. So do not give up on yourself, guys. Whatever you're thinking about to achieve, keep going, because things will work out if it's meant for you. Now my lessons might not be very much fabricated into the flow. This is just a list of things which I've learned. So another thing would be dealing with jealousy. This is one of my toxic traits which many people don't know, but here I am putting my vulnerable side. I do get jealous very easily. I get jealous. I start comparing myself with others. बचपन में भी ऐसा होता था. If I see someone's new water bottle or a new bag, so I would go and ask my parents to buy me that. I've done that quite a few times, and मेरे अंदर एक comparison आ जाता है कि who's better और ऐसा. But इस साल guys मुझे इतना अच्छा एक नया perspective मिला ना. I'm so grateful to have that perspective in my head, and I'm never looking back. जेलेसी ना आपको उस इंसान से होती है, ये मैंने किसी वीडियो में देखा था कि आप किसी इंसान से तब जेलस होते हो जब वो चीज़ जेन्युइनली आपके अंदर होती है. सी मटेरियल जेलेसी दैट इज़ वेरी इमेच्योर थिंग. मैं मोस्टली, वो तो तब मैं बच्ची थी, मैं मोस्टली एबिलिटीज से,
स्किल्स से जेलस हो जाती हूँ, आई कैन नॉट डू दैट एंड वाई इज दैट पर्सन डूइंग इट। बट इस साल वो जेलसी मैंने इंस्पिरेशन में ली है। वन ऑफ माई रिलेटिव्स टोल्ड मी कि किसी और ने कुछ अचीव किया है या किसी और के पास कुछ है, उसको ऐसे मत देखो कि मेरे पास क्यों नहीं है, उसको ऐसा देखो कि अगर उसके पास वो है तो वो मैं भी कर सकती हूँ, वो मेरे पास भी हो सकता है, दैट अप्रोच। एंड अनदर थिंग, आप किसी चीज़ से ना तब जेलस होते हो जब आपको वो चाहिए होता है या वो चीज़ आपके अंदर भी होती है, सब इट इज़ समवेयर इन यू, तभी यू आर रिलेटिंग विद दैट पर्सन। समथिंग विच यू डोंट वॉन्ट, और उस फील्ड में आप किसी को बहुत अच्छा करते हुए देखोगे, आपको नहीं फर्क पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट लेसन इज द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। दिस इज अ बुक विच वॉज रिसेंटली गिफ्टेड टू मी बाय अ फ्रेंड। पढ़कर ये भी समझ आया कि आई हैव बीन अप्लाइंग दिस इन माई लाइफ। गाइज, आई एम in this preparation journey and it demands a lot of isolation from me. जैसे जैसे आप बड़े होते हो, situations change and people outgrow themselves. So that also happened with me, और मुझे उस चीज़ से बहुत दिक्कत होती थी शुरुआत में. I just could not spend time with myself and my thoughts because my thoughts were all the time overly critical about myself, or I used to be very negative. तो मुझे अपने thoughts के साथ अपने साथ रहना अच्छा नहीं लगता था. I constantly wanted somebody, and उस वजह से मैंने डेस्परेशन में आके मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए. आई डिड थिंग्स आई डिड नॉट वांट टू डू. आई ट्राइड टू फिट इन, बट इट डज नॉट रियली वर्क. यू नो, बीइंग ऑन योर ओन इज अ फ्रीडम. आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो, और इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट फीलिंग. वंस यू गेट कंफर्टेबल विद बीइंग ऑन योर ओन एंड नॉट कॉन्स्टेंटली पिटिंग योर सेल्फ फॉर बीइंग लोनली, तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क इन अ वेरी फोकस्ड मैनर. मोस्टली जो क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं वो आइसोलेशन में ही आते हैं. मेरी बेस्ट प्रोडक्टिविटी आइसोलेशन में ही निकलती है. पहले मेरा बहुत रहता था कि यार, बट एज जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, आई थिंक solitude is genuinely your power. I just hope you all are not getting bored. I am very close to the end. Next lesson is your body and mind are the most important things. You have to, it's must to focus on taking care of yourself. Like I said, you are on your own. तो आपको अपना ख्याल ऐसे रखना चाहिए जैसे आप किसी ऐसे इंसान का रखोगे जिससे आप बहुत प्यार करते हो. I have this acronym which is like SEWW. Sleep, eat, workout, worship. If you are sleeping like a baby for enough number of hours, that's a luxury. आजकल के टाइम में तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते लोग सोते ही नहीं हैं. गेट गुड स्लीप, ईट, बी वेरी माइंडफुल ऑफ वॉट यू ईट. इस साल की बिगनिंग में मैंने इतना अच्छा अपना, आई फिक्स्ड एवरी प्रॉब्लम आई हैड सम issues with my digestion, with liver, with vitamin B12 का deficiency था. I was dealing with hair fall, a lot of things, and guys, I did not take any medicine. पहले मैं बहुत injections लेती थी, supplements लेती थी. This year I just fixed my diet. I used to eat a lot of vegetables and fruits. So if you really get mindful of what you are eating, you can solve a lot of प्रॉब्लम्स. वर्कआउट बहुत ज़रूरी है. अगर वर्कआउट आपकी लाइफ में नहीं है, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ मच बेटर लाइफ. You are missing out. Just know that. Feel sad about yourself. You are not living an appropriate life if you are not working out. The fourth thing is worship. Worship in any manner. You need to have कुछ तो आराध्य आपका होना चाहिए जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो. वो होना चाहिए. Somebody whom you can rely on blindly. For me it's भगवान जी, गॉड. मैं बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पूजा पाठ और ये सब करती हूँ, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गॉड. मैं इतना बातें करती हूँ, मुझे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, जाके बातें करना, सब बताना, एंड एवरी सिंगल टाइम आई कम बैक विद एन आंसर. So worshipping is very important. You have a small start, but just develop some
spiritual angle in your life. That's very important. कभी कभी लाइफ इतनी chaotic हो जाती है, इतने setbacks आते हैं and you feel lost and lonely. तब this spiritual thing works. You have this faith कि कुछ नहीं खराब हुआ है. अगर कुछ खराब हो भी रहा है, I know there is somebody working in the background जो सब ठीक कर देंगे. That belief you need to have. So taking care of your body and mind is very important, because if this is fixed, body and mind is fixed, आपकी बाकी की लाइफ पूरी तरीके से फिक्स्ड हो जाएगी. फिक्स्ड से मुझे एक बात शेयर करनी है गाइस. फिक्सिंग टाइम इज द अल्टीमेट सोल्यूशन टू गेन कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ. हम लोग हमेशा ना इस चीज़ के लिए रहते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए लाइफ में. कंसिस्टेंसी आती है टाइमिंग फिक्स करने से, एक फिक्स्ड रूटीन रहने से. बी दैट सन की, इंसान की, यार ये तो इस वक्त पर यही काम करता है. इतनी ईजी हो जाती है ना लाइफ इफ टाइमिंग्स इन योर लाइफ आर फिक्स्ड. इवन योर ब्रेक्स शुड बी फिक्स्ड. दिस इज द सेकेंड लास्ट थिंग मैंने सीखा है अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. डू नॉट सप्रेस योर इमोशंस. पहले मैं अपने इमोशंस को डिनाई करती थी. पहली बात तो फीलिंग्स पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए. फीलिंग्स आर, दे कम एंड दे गो. फीलिंग्स के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए. यू फील वट एवर यू वांट टू फील. इफ यू आर फीलिंग फियर, feel it, let it go. If you're feeling sorrow, feel it, let it go. If you're feeling excited, feel it, let it go. That's emotional intelligence. ठीक है, इमोशंस को आने दो. ठीक है, वो आ रहे हैं, उसको सप्रेस मत करो, because then you will keep thinking about it. Feel it completely and then just let it pass like water. That's a big emotional intelligence thing. एक और मैंने एक वीडियो में ये देखा था कि suppose you're holding this glass which weighs what 250 or 250 ml I guess, और ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखती हूँ nothing happens. इसको मैं 4 घंटे के लिए पकड़ रखती हूँ, मेरे आर्म में दर्द होगा. अगर मैं पूरे दिन के लिए पकड़ के रखती हूँ so my arm will be paralyzed. So this cup is like stress. ये आपका जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस है, ये वो है. इसको ठीक है पकड़ो और वापस रख दो. डोंट होल्ड इट फॉर द होल डे कि आप उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो. सो लेट थिंग्स फ्लो. हमारी लाइफ का नेचर होता है टू फ्लो. लास्टली गाइज, जस्ट लिव इन द मोमेंट. डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर पास्ट. पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट. आगे के बारे में मत सोचो, कुछ नहीं होता आगे के बारे में सोचना. यू जस्ट नीड टू टेक लेसन्स एंड कीप मूविंग ऑन. प्रायोरिटी पीस को दो, एक्सेप्टेंस को दो कि हाँ दिस इज माई लाइफ एंड आई जस्ट हैव टू मेक दिस फुलफिलिंग. टेक रिस्क्स and then take lessons and keep growing, keep glowing. Just be obsessed with growth, but also remember that healing is also equally important for you all. And be happy, because happiness is just a perception. वो कहीं भी कि वो हो जाएगा तब मैं खुश होंगी, वो मिल जाएगा तब मैं खुश होंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए. हैप्पीनेस इज जस्ट अ परसेप्शन. लव योर लाइफ. I think I am done, guys. Enough of this pep talk. I hope I could contribute something in your life, like some sprinkles. We all know these things, okay? I may be coming up with more videos and more vlogs. वैसे तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ happening नहीं है. I mostly spend my time studying, but still कुछ दिन ऐसे होते हैं which are worth vlogging. If you're still there, thank you so much for watching this video, for listening to me. And if you feel कि आपने कोई लेसन इस साल सीखा है, समथिंग डिफरेंट जो आपको इस साल एक्चुअली हिट किया है कि हाँ यार दिस इज द थिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन टू रीड योर ओपिनियन, बिकॉज आई लव टॉकिंग एंड डिस्कस. दैट इज इट गाइज. लव यू all. Take care of yourself. Love your life. Bye bye.